Good evening. Welcome to my channel, The White Shirt Man. So this is my first YouTube live, and I'm very excited that this is an amazing tool where we can talk and we can share the knowledge, we can acquire the knowledge, and this is one of the more important thing that we are talking about something very amazing thing today, which is called brand ambassadors. So brand ambassador in healthcare, which is one of my very favorite subject, and I always say that this is something very near to my heart. And today we'll be talking about why brand ambassador, why brand ambassador is so important in this life, particularly in the healthcare industry. So first of all, before understanding what is brand ambassador, we really need to understand who is a brand ambassador. So if we talk about the typical brand ambassador, a brand ambassador is a kind of a person engaged by organizations or a company or a corporate to represent its brand, its services, its product, or whatever, to help to increase the brand visibility and to create the awareness amongst these services, among the whatever the offering we are doing it. So आपने देखा होगा कि we'll do like कुछ मीठा हो जाए और केसरिया or something, so we recognize the brand, and we just by seeing the face of the some people on a commercial, we can connect with the brand कि okay बाबा, this is ये जो है ना, ये इसका advertisement कर रहा है. So that's how in advertising or marketing, it's been a very long time. People or big corporates using the brand ambassador for their product or services, sales and marketing and all the stuff. So we are into the healthcare, right? Healthcare marketing. So healthcare marketing, how we can utilize this brand ambassador, and obviously we cannot hire the Amitabh Bachchan to endorse our hospital or our clinic or our individual practice. But do you know who is our real brand ambassador? For example, say if you have a clinic, if you are a hospital, so who is your brand ambassadors? Majority, whenever I spend 24 years into the healthcare marketing, whenever I'll ask these questions to the doctor or a business owner or a hospital or a healthcare owners, though they say my patients are the most important and they are my brand ambassadors, and they create the word of mouth. Now word of mouth is golden tool in a marketing, and that to particular healthcare industry. आप healthcare industry में अगर देखोगे तो वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है. पेड डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सब कुछ साइड में रह गया और वर्ड ऑफ माउथ एक जगह पे रह गया. Because healthcare is something very kind of related to the human, and one human, once they advocate, they say that this doctor is good, this hospital is good, this particular clinic is really good, then the other person, a friend, family or relative, they typically agree on that and they go by their word, and that's what word of mouth. तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि यार मेरे पेशेंट्स जो है ना वही मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. But unfortunately, many of the clinics or many of the doctors or individual practitioners forget about another brand ambassador who is there around. So I'll just give you the name so you can be I'm not sure that are you using that or not, but this is in my 24 years of experience, what I've seen, and majority healthcare providers ignore this thing. So apart from the patients, your patients and relatives, आपके पेशेंट्स जो आते हैं वो पेशेंट के साथ रिलेटिव्स भी आते हैं, उनके फ्रेंड आते हैं, कोई ना कोई आता है. दे आर ऑल्सो योर ब्रांड एम्बेसडर्स. योर स्टाफ मेंबर्स, your receptionist, nursing staff, nursing assistants, your assistant doctor, your security guard, your ward boys, your housekeeping guy, your FMB guy, whatever. Like if you are in a big hospital, corporate hospital, then there are a lot of various department, HR, account, supply chain, store management, pharmacy, all these departments. So overall, if we'll talk about the brand ambassador, our own staff, our own employee, they are the biggest brand ambassadors. Apart from that, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि लाइक देयर वेंडर्स, बिकॉज हम लोग क्लिनिक या हॉस्पिटल या कुछ भी चलाते हैं तो हमारे वेंडर्स भी होते हैं. Those is to supply the pharmacy consumables and various things to the hospital or a clinic.
they are also our brand ambassadors. Suppliers, again, I vendor or supplier, the same thing. Then the if you are individual practitioners or a doctor, आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे एमआर वाले लोग आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनके बॉसेस आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर आते हैं, दे आर ऑल्सो योर ब्रांड एम्बेसडर्स. Your security staff, never forget them. They are the first phrase of your hospital or clinic, because इंसान जब आता है, पेशेंट जब आता है, एंट्री जब करता है, how your securities behave, they carry the certain image of your overall clinic or a hospital. So they are also a part of brand ambassadors. So एक तरीके से देखने जाए, अगर हम लोग हेल्थ केयर बिजनेसेस के अंदर है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी हॉस्पिटल क्लिनिक के साथ, दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स. नाउ हाउ टू यूटिलाइज दिस ब्रांड एम्बेसडर्स एंड why we are ignoring this, and how we can increase or enhance our brand visibility or patient footfall by utilizing this brand ambassadors. So let me give you a very simple example. ये आपकी क्लिनिक पे या आपके जो भी हॉस्पिटल और कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, वहां पे यू कैन डू दिस ट्रायल ऑल्सो. एक दिन मॉर्निंग में आप जाओ, रिसेप्शनिस्ट को पूछो कि आज हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कौन सा पोस्ट डाला हुआ है, या फिर हमने ये वीक के अंदर कौन सी अच्छी सर्जरी की हुई है, या फिर आप सिंपली यही पूछ लो कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ आवर हॉस्पिटल और क्लिनिक, व्हाट ऑल काइंड ऑफ डिजीज वी आर सॉल्विंग, किसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन सी यूनिक सर्जरीज करते हैं, कौन कौन सी यूनिक टेक्नोलॉजी वी हैव इट. Believe me, 50% of your staff will not be aware about certain things. Particularly social media की तो मैं बैट लगा देता हूँ कि 90% टाइम they don't know what is going on your social media. आपकी YouTube चैनल के ऊपर क्या चल रहा है, आपके Facebook, Instagram या आपकी वेबसाइट के ऊपर बैनर क्या लगा हुआ है. You'll be wondering that this is very funny thing. During my training and development, मैं बहुत सारे स्टाफ को ये पूछता हूँ कि भाई, आप जब हॉस्पिटल में एंटर होते हैं तो आपकी हॉस्पिटल का जो मेन बोर्ड है या क्लिनिक का जो मेन बोर्ड है, उस पे क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है, डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, उनकी डिग्री लिखी हुई है, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आपका इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, इट्स half of the people they just ignore कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है. You may comment if you think that I'm wrong, because this is something when I'm saying something, so it's a very research oriented thing. I've taken a lot of training and lot of interaction with the staff, and people don't know exactly about certain things. So what if WhatsApp, this is every day we are into the WhatsApp. आप जब भी देखो दिन में कितनी बार WhatsApp चेक करते होंगे, including our staff and everyone. हर इंसान जो WhatsApp यूज कर रहा है, ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोग WhatsApp यूज कर रहे हैं, उनके 5 कॉमन ग्रुप्स होते हैं. 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये 4-5 ग्रुप्स तो ऐसे होते हैं जिनमें वो इनवेरिएबली कुछ भी हो जाए वो इंटरेक्ट करते ही करते हैं. एक होता है आपका इंटरनल ग्रुप, जिसके अंदर आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस डालते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते हो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, पेशेंट फुटफॉल और पेशेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और जो भी डेली वर्क है उसके रिलेटेड चीजें डालते हो, तो उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं. दूसरा होता है उनके फैमिली का. फैमिली में भी 2 टाइप की फैमिली होती है. इफ इज आई एम मैरिड, सो आई विल बी हैविंग 2 फैमिली ग्रुप्स. वन इज फ्रॉम माय माय ओन फैमिली, एंड सेकंड वुड बी ऑन दिस माय इन-लॉज साइड की जो फैमिलीज होती है उनके पास होगा. थर्ड और फोर्थ होता है आवर फ्रेंड सर्कल, ओल्ड स्कूल फ्रेंड सर्कल्स, कॉलेज फ्रेंड्स. उनका एक ग्रुप होता है, we always chit chat, we feel very good while talking on that particular group. Apart from that, हमारा एक प्रोफेशनल ग्रुप होता है. से फॉर एग्जांपल से आई एम इनटू द हेल्थ केयर मार्केटिंग, तो जैसे हमारा एक होता है, हमारा एक है AHNP इंडिया फाउंडेशन. इट्स एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर मार्केटिंग प्रोफेशनल. हमारा एक ग्रुप बना हुआ है. So we regularly see the what's going on, what my colleague or what my marketing people are doing across in India, क्या नई चीज हो रही है. So we keep on interacting on that particular WhatsApp group. इसके अलावा भी हर किसी के इंसान में कुछ ना कुछ 1-2 ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें इनवेरिएबली दे आर कम्युनिकेटिंग दिस थिंग. और अगर हम लोग बात करें ये ग्रुप्स की, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 50 से लेके 250 तक का
आप समझ लो 100 लोग हैं एक व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, और ऐसे 5 ग्रुप है जो इंसान इनवेरिएबली उसके अंदर इंटरेक्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल से इफ यू आर अ कार्डियक हॉस्पिटल, और से यू आर ऑर्थोपेडिक और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यू आर डूइंग, और इफ यू आर इनटू द आईवीएफ क्लिनिक, आपने अगर अच्छा काम कुछ किया है, कोई पेशेंट का काम बहुत अच्छा हो गया है, या कुछ भी ऐसी नई चीज हुई है, आपने नया इक्विपमेंट दिया है, या इफ यू आर कमिंग विद अ न्यू क्लिनिक और न्यू सर्विसेज, और इफ यू आर कमिंग विद अ न्यू पैकेजेस और हेल्थ चेकअप प्लान्स, व्हाट इफ अगर आपका एक स्टाफ वो जो भी आपका क्रिएटिव है, जो भी आपका सोशल मीडिया का पोस्ट है, या जो भी आपका यूट्यूब का, या जो भी मार्केटिंग कोलेटरल्स जो भी है, वो मार्केटिंग कोलेटरल्स को अपने स्टेटस पे अपडेट कर दे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, वही चीज को अपने ग्रुप में शेयर करे और लिखे कि दिस इज समथिंग, आई एम प्राउड दैट आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, आई एम प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद दिस पर्टिकुलर डॉक्टर who had achieved this particular thing. We are feeling so good by providing the care to this particular patients, and today we are very happy while he is cured, unka acha surgery acha ho gaya, he revived from the disease or something like that. If I post this kind of a thing into the my group, 5 groups into 100, that means within a few seconds I can reach to the 500 people. और ये कौन बोल रहा है? आपका स्टाफ बोल रहा है। और आपका स्टाफ जब बोल रहा है, वो वाले ग्रुप में बोल रहा है जहां पे वो रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहा है, तो ही बिकम्स योर ब्रांड एडवोकेसी। तो ब्रांड एडवोकेसी क्या होता है? जो इंसान मींस आपके इंटरनल है, वो खुद बोल रहा है कि वी आर गुड, और वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, तो उनका वर्ड ऑफ माउथ का जो वैल्यू होता है बहुत हाई होता है। तो सिमिलर वे, अगर आपके पास 10 एम्प्लॉई है और 10 into 500, so you can reach to the 5,000 people, and probable 50 to 60% chances are that कि out of that 5,000 people, 2,500 to 3,000 people will read about that message, he'll open that video, he'll see the whatever the communications you are doing. So this is a very useful and very quick marketing trick, you can say that immediately you can reach to the टारगेटेड क्राउड। अभी मैं टारगेटेड क्राउड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉई है वो आपके लोकलाइट में होता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई चलो आप अहमदाबाद के अंदर या दिल्ली के अंदर आपकी हॉस्पिटल है और आपका स्टाफ आ रहा है 200 किलोमीटर दूर से। ही मस्ट बी ट्रैवलिंग अराउंड 50 किलोमीटर के रेडियस में आता है, और ज्यादातर केसेस में उनकी फैमिली अराउंड होती है, उनके फ्रेंड्स अराउंड होते हैं, एंड बाय डूइंग दिस थिंग उनका एक पूरा जो नेटवर्क है, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, उसके अंदर आपका प्रमोशन इजीली हो जाता है थ्रू दिस ब्रांड एम्बेसडर्स। सो ये तो एक पहलू हो गया कि इजीली यू कैन रीच इट टू देम। अभी सेकंड में आपको टास्क दूंगा कि आप आपके सोशल मीडिया पे जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर द चैनल यू हैव, एंड जस्ट गो एंड रिव्यू द लास्ट 3 months और 1 month पोस्ट एंड लाइक और एंगेजमेंट। आप देखोगे कितने लोगों ने लाइक किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके वहां पर 10 एम्प्लॉइज है, आपकी क्लिनिक है और 10 एम्प्लॉई है, तो विदाउट फेल एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर 10 लाइक तो आनी ही चाहिए, बिकॉज योर ओन स्टाफ दे शुड बी लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन यू। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग यू रियली नीड टू थिंक, बिकॉज इफ योर ओन पीपल इज नॉट इंटरेक्टिंग विथ यू ऑन अ सोशल मीडिया, देन हाउ वे कैन expect the entire world around are free to engage with us. So start from within. और ब्रांड एम्बेसडर जो है, ये ब्रांड एम्बेसडर कैन change the entire marketing gimmicks. He can change the entire promotional how we are doing the promotions and everything. So brand ambassadors, ये तो एक पहलू हो गया स्टाफ और एम्प्लॉय के बारे में। वेंडर्स, सप्लायर्स, आपको भी पता है कि वही सप्लायर आपके कंपटीशन में भी जाता है, आपके कॉम्पिटिटर के वहां पर भी सप्लाई करता है। एट द सेम टाइम ही इज आल्सो हैविंग हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अभी ऐसा तो क्या होगा कि आउट ऑफ से 5 हॉस्पिटल, दैट पर्टिकुलर वेंडर और सप्लायर आपके बारे में ब्रांड एडवोकेसी करे। ऐसा तो नहीं है कि आपने लाखों का बिजनेस या करोड़ों का बिजनेस या हजारों का बिजनेस उसको दे दिया तो he'll be your person. No, business is something different, and by doing advising on a healthcare thing to friend circle और family is totally different, believe me. और आपने आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी देखा होगा कि आपके जो नियर बाय लव वंस होते हैं वो नॉर्मली पेशेंट्स आपको नहीं भेजते, बट उनके जो रिलेटिव होते हैं वो आपके पास भेजते हैं।
अगर कुछ ऐसा होता है, पर्सनल कुछ होता है तो दे विल गिव यू अ कॉल एंड टेक द एडवाइस कि डॉक्टर साहब मुझे बता दो ना इसमें क्या करना है, बट रूटीन पेशेंट विल नॉट कम। सो वेंडर्स जो है, ये वेंडर्स भी बहुत सारी जगह पे जाते हैं और इनको भी हमको एजुकेट करना चाहिए। वी शुड एस्टैब्लिश द चैनल विद दिस वेंडर्स, medical representatives, and we should have some kind of communication channel where we can communicate to them that boss, this is what happening in our clinic, this is what we are doing new in our hospitals, and by doing this we can definitely reach to this untapped, unutilized brand ambassadors, converting into the brand advocacy. They'll advocate, they'll put a word about you, they'll put a word about positive words about your practices or service or facilities to their उनकी जो सर्कल है वो सर्कल के अंदर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखो तो ब्रांड एम्बेसडर्स, पेशेंट रिलेटिव और पेशेंट टेस्टिमोनियल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और हमारे ओन पीपल, विच इज इट्स लाइक नो कॉस्ट मार्केटिंग। आपको कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, आपको खाली रिग्रेसली या फिर बाय कॉन्शियसली यू नीड टू इन्वेस्ट योर फ्यू मिनट्स एंड टेल योर स्टाफ, योर एम्प्लॉई एंड योर स्टेक होल्डर्स to promote your positive things, like whatever the good thing you are doing. We can reach to the untapped market and to the target crowd. Untapped तो है but to the target crowd, because यही target crowd को पहुंचने के लिए आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, लिफलेट्स करते हो, एडवर्टाइजमेंट्स करते हो, what all not do you are doing. But why not we can establish a good environment around the culture, environment amongst the organizations, and we can enhance this brand ambassadors visibility, because end of the day in healthcare word of mouth is the golden tool. So I'm sure आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में समझ में आया होगा, एंड do utilize this thing, and I love to hear the comments once you are utilizing any of these brand ambassadors in a real practice, and if you are getting a good results, then डू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइव। आई एम श्योर लाइव के अंदर अभी जो लोग हैं उनको तो ये पता चलेगा ही चलेगा, बट उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल विल बी सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आफ्टरवर्ड्स। दे कैन बी दे कैन कमेंट, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, एंड मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी भी बोली है जिसके अंदर आई क्लेम दैट दिस इज व्हाट हैपनिंग, दिस इज व्हाट द जनरल थिंग. And if you think that if you are already doing this practices, I love to hear that how you are getting the results from utilizing this brand ambassador into the real practices, and how the performance is up to the mark. And if you are invented some new thing into the brand ambassadors, the communications, then I would really love to hear that what all things happening, because end of the day marketing is a process and learning never stops. मुझे जितना पता है through the experiences and through the whatever the 24 years I spent into the healthcare marketing, I learned from them. I learned from the doctors, I learned from the staff, I learned from the so many people through the observations and all. अगर आपने भी ऐसा कुछ, if you have something new in your field, if you come up with something new, innovative things, so do keep sharing on this platform, so at least our viewers, our participants, our subscriber can get the knowledge. And end of the day, knowing is doing and doing is doing. हम सबको पता है कि क्या करना है, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली करते नहीं है. तो लेट्स डू इट एंड लेट्स enhance the brand ambassadors visibility amongst our own target crowd. So see you soon, and we'll be continuing this kind of YouTube live very frequently, and we'll come up with the latest updates, trends, and techniques to enhance the healthcare marketing. Very soon we'll be coming up with the search GPT. So chat GPT is coming up with this search GPT, which is like huge competitor of Google, Yahoo, or Bing. So we'll be coming soon with the latest update and happening around the search GPT. I'm having a very close eye on it. The whatever the latest thing is happening in the search GPT, and very soon we'll be getting this thing, like how the search GPT will be changing the entire search engine work things, and how patients can be educated through the search engine. So see you soon.
Thank you, P, by listening this thing. See you soon. Bye bye. Thank you.